circular motion. Circular motion. What is circular motion, Aditi? What is circular motion? An object moves along a circular path. If an object moves along a circular path, is called circular motion. One example of circular motion. Motion of the clock, motion of the second hand of the clock. Clock is not moving. Clock is fixed. Motion of the second hand of the clock. Motion of the fan, rotation of the fan. Motion of the wheels of the car. Motion of the wheels of the car. Motion of the planet around the sun. All these are what? Or motion of the earth around its own axis. All these are circular motion. If an object moves along a circular path, is called circular motion. And if an object moves the circular path with uniform speed, if an object moves along a circular path with uniform speed, is called uniform circular motion. Is called uniform circular motion. If an object moves along a circular path with uniform speed, is called uniform circular motion. Uniform. So in uniform circular motion, at every point the speed is constant. The speed is constant. The speed is a very important part of here. Speed is constant. So what is uniform circular motion, Lakshya? What is uniform circular motion? Sir, the motion of an object around a circular, when an object moves around a circular path in a uniform speed. Uniform speed. That is, if an object travels equal distance in equal interval of time along a circular path or uniform speed. Simply we can say uniform speed. What is uniform speed? If an object moves equal distance in equal interval of time, that is in circular path, is called uniform circular motion. What is uniform circular motion? Shivanki, what is uniform circular motion? Shivanki, what is uniform circular motion? If the motion of, if an object is moving along a circular path with uniform speed, an object moves along a circular path with uniform speed is called. What is uniform circular motion? What is uniform circular motion? So, in the case of uniform circular motion, at every point the speed is constant, but the velocity of the object at every point in a uniform circular motion is not constant. It changes. Why? Why in the case of uniform circular motion, velocity changes continuously? Direction of motion changes. Direction of motion changes. And in the case of circular motion, what is the method to find the direction of the velocity at a given point? Tangent. You have to draw a tangent. Suppose you have to find the direction of the velocity. Suppose object is moving this side. That is anti-clockwise direction. The object is moving anti-clockwise direction. Which direction? So at this point, what is the direction of the velocity? This is the direction of the velocity. That is V1. This is V1. At this position, what is the direction of the velocity? This is V2. At this position, this is the velocity.
At this position, this is the velocity. So here V2, V3, V4. So this is the direction of the velocity at a different point. But the magnitude of these velocities are same. The magnitude of these velocities are same. Why? Why the magnitude of all these velocities are same? The magnitude of the velocity is called speed. Speed is constant. This is uniform circular motion. This is uniform circular motion. Uniform circular motion. What is uniform circular motion? Shivangi, what is uniform circular motion? The motion of an object in a circular path with uniform speed. If an object moves along a circular path with uniform speed, the speed is constant. At A, B, C, D, the speed is constant, but velocity changes continuously. Why velocity changes? Direction of motion changes continuously. So velocity also changes. Velocity of the object also changes. Velocity of the object also changes. If you leave any object from position A, it moves this side, tangentially along this path. If you leave the object from the point B, it moves this side. From the point C, it moves this side. If you rotate an object, rotate करने इसमें. If you leave this object, if you leave this object from this side, it moves this side tangentially. देख सकते हैं, ठीक है? It moves this side, tangential direction. It moves tangentially this direction along a straight path. After leaving circular path, it moves straight path tangentially. That is a tangential. Okay. So, but this is uniform circular motion. This is uniform circular motion. In the case of uniform circular motion, the magnitude of V1, and the magnitude of V2 and magnitude of V3 and magnitude of V4 are equal. Why it is equal? Because speed is constant. Speed is constant. Clear? But velocity changes. Why velocity changes? Velocity also depends on direction. At every position, direction of the motion of the object changes. So velocity also changes. Velocity also changes. So in uniform circular motion, speed is, this is speed. This is speed. Speed is constant. Speed is, but velocity changes. Why velocity changes? Direction of motion changes continuously. Direction of motion changes continuously. So speed is not changing. So direction of motion changes, therefore velocity also changes. Velocity also changes. But speed is constant. Speed is constant. And because of the change in velocity, it is always said to be accelerated. It is always said to be, what is acceleration? Change in velocity upon time. To produce acceleration which is required, change in velocity. In circular motion, velocity always changing because of change in direction. Because of changing, so it also produces acceleration. That acceleration, देखो very important term आएगा, ठीक है? इसका derivation 100% का आता है, ठीक है? 100% क्वेश्चन आता है आपका यूनिट टेस्ट में, अभी आने वाला है ना टेस्ट, ठीक है? Listen. In the case of uniform circular motion, direction of motion always changes continuously. So velocity also changes. Why velocity changes? Direction changes. Because of change in direction, velocity changes. Because of change in velocity, produces acceleration. So uniform circular motion is said to be accelerated motion. Uniform circular motion is said to be accelerated motion. Why, Parth? Why?
Why uniform circular motion is said to be accelerated? Because it moves along a circular path with constant velocity. क्या क्या wrong answer पार्थ क्लास में ध्यान से सुन लो क्या है तानी what is the answer velocity कभी भी constant नहीं हो सकते circular motion Sir, because speed is the same, but direction changes, so velocity also changes. yes direction changes due to which velocity changes due to change in velocity it is said to be accelerated it is said to be accelerated in the case of uniform circular motion direction of motion of an object changes continuously so velocity also changes hence it is said to be accelerated hence it is said to be accelerated why an acceleration is produced that acceleration and the direction of that acceleration is always directed towards the center a center seeking acceleration is always directed towards the center is always directed towards the center along the radius what is the direction of that acceleration towards the center is called center seeking acceleration is also called centripetal acceleration is called centripetal centri because center petal का मतलब seeking है ना seeking centripetal acceleration अब सुना ना centripetal force that is due to centripetal acceleration है ना centripetal mass into centripetal acceleration is called centripetal force mass into centripetal acceleration is called centripetal force why it is called centripetal acceleration because a center seeking force acceleration center seeking acceleration it is always directed towards the center and what is the reason for this acceleration due to change in direction in circular motion direction of motion always changes so velocity also changes due to change in velocity an acceleration is that acceleration is called centripetal is acceleration and is always directed towards the center of the circular motion what is centripetal what is the cause of centripetal acceleration Ashmit Because it is always changing its direction. that due to the change in direction of motion due to change in direction of motion which changes velocity due to change in velocity which produces acceleration and that acceleration is called centripetal acceleration why it is called centripetal acceleration it is center seeking acceleration directed towards the center along the radius so you have to derive the expression for that centripetal acceleration but before the derivation you have to know the some terms related to circular motion that is related to circular motion so इतना parts clear है सबको but the exist ध्यान रखना in the case of circular motion in physics total 4 accelerations are produced circular motion में 4 accelerations are produced one is centripetal acceleration second is tangential acceleration the cause of tangential acceleration is change in magnitude of the velocity here velocity is constant है ना speed is constant अगर speed change हो रहा है ये speed constant क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगा already changes or speed also changes the magnitude of the velocity also changes so due to change in magnitude of the velocity an acceleration is produced that acceleration is called tangential acceleration ध्यान से सुन लो what is tangential acceleration clear है so अगर देखो
What is the name of this acceleration, Tani? What is the name of this acceleration? Centripetal acceleration, because directed towards the center. Directed towards the center. And the cause of centripetal acceleration is due to change in direction. And the cause of tangential acceleration, that is due to change in magnitude of the velocity. Here velocity का magnitude same है. अगर change हो रहा है V1, V2, V3, V4 का value change हो रहा है. It is possible in which case? Non-uniform circular motion. In non-uniform circular motion, magnitude of the velocity will change, due to which an acceleration produced. That acceleration is called tangential acceleration. Clear, Tani? What is the cause of tangential acceleration? Change in magnitude of the velocity. Change in, अगर magnitude of the velocity is equal to no change in magnitude of the velocity is constant, what is the value of tangential acceleration? 0. कोई change नहीं है. That is equal to 0. Clear? अगर it produces tangential acceleration, इसका direction क्या होगा? Tangent. This is tangential acceleration. Clear? Is it possible to find the net acceleration of these two? Is it possible? By which method we can find the net acceleration? Parallelogram law of vector addition. दोनों coincide कौन सा कर रहे हैं? Tail coincident किया तो कौन सा apply करना है? Parallelogram law of vector addition. So apply parallelogram law of vector addition. So this is what? Net acceleration. So net acceleration is the resultant of centripetal acceleration and tangential acceleration. Third acceleration कौन सा है? Net acceleration. Net acceleration. Net acceleration. So A net, according to parallelogram law of vector addition, is equal to P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. So इधर क्या होगा? AC square plus AT square plus 2AC AT into cos 90. What is the angle between these two? देखो radius and tangents are always perpendicular. पढ़ा ना 10th class में similar triangles में, sorry circle chapter में, circle chapter. Radius and tangents are always perpendicular. So theta 90 degree and cos 90 0. So only cancel आएगा under root AC squared plus AT squared. ध्यान रखना, बुक में गिवन नहीं है, ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. So 3 acceleration clear है सबको? What is the first acceleration? What is the cause of this? Change in direction. Second one, what is the cause of the tangential acceleration? Change in magnitude of the velocity. And third acceleration is net acceleration. That is a resultant of centripetal acceleration and tangential acceleration. That is given by A net is equal to under root AC squared plus AT squared. And the fourth one is due to the rotation of the object. Due to the rotation of the object, that is called angular acceleration. That is called angular, means object is rotating along a circular path, due to which an acceleration produced. That is called angular acceleration. Fan is rotating. कौन सा acceleration? Angular acceleration. Clear है? Due to the rotation is called. So कोई भी object is moving along a circular path, उसके ऊपर कितना acceleration होगा? 4 acceleration. What are 4 acceleration? One is centripetal acceleration. Second is tangential acceleration, or third is net acceleration. Net acceleration is the net acceleration resultant of AC and AT. And last is angular acceleration. And what is angular acceleration? अभी आने वाला भी. तक क्लियर है?
clear? For acceleration, if any objects move along a circular path, 4 accelerations are produced. ठीक है, J के लिए very important concept है all this. ठीक है, clear? ठीक है, हम CBS में सिर्फ मैक्सिमम एक दो नहीं, दो ही आएगा बेटा. ठीक है, clear? ठीक है. So 4 different acceleration का meaning clear है सबको? So what are the 4 different accelerations produced? Centripetal acceleration, second. Tangential acceleration, net acceleration. What is the cause of centripetal acceleration? Change in direction. What is the cause of tangential acceleration? Change in the magnitude of velocity. Change in magnitude of the velocity. That is also called change in speed. Change in magnitude of the velocity is called speed. What is net acceleration? The resultant of centripetal acceleration and net acceleration and tangential acceleration. the resultant of tangential acceleration and centripetal acceleration is called net acceleration. What is the formula to find the net acceleration? Under root AC square plus AT square. Parth, what is the cause of tangential acceleration? Change in magnitude of velocity. Change in magnitude. Class में ध्यान रखो Parth. Change in magnitude of the velocity. Lakshya, what is the cause of centripetal acceleration? So change in direction. Change in direction. And what is the formula to find the net acceleration, Shivanki? AC square plus AT square. उसका ऊपर है कुछ? Under root AC अंडर रूट. ठीक है, अंडर रूट AC square plus AT square. Under root AC square plus AT square. What is the direction, Tani? What is the direction of the centripetal acceleration? towards the center. Yes, towards the center. Towards the center. What is centripetal acceleration, Namit? What is centripetal acceleration? Centripetal acceleration is the acceleration in which the object changes its velocity with respect to the direction. What is centripetal acceleration? The acceleration produced in a object moving in a circular path. Okay, and that is always acting towards the center. And what is the cause? Change in direction. Change in direction. Clear, सबको? Now the different terms that is related to circular motion. इसको बाद हम derivation करना चाहिए. ठीक है? The first one, angular displacement. Angular displacement denoted by theta. Angular displacement. How much angle? देखो, suppose an object moves along a circular path. Okay, this is the direction of motion. At any instant, okay, initial position, I suppose. Initial position of the object be P0. After a time t1 second, the object reaches the point A. After a time t1 second, initially एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन इधर है, t1 सेकंड में इधर आ गई, t2 सेकंड में और भी दूर आएगा ना. सो इन t2 सेकंड इट रीचेस द पॉइंट B. Let the initial position of the object be P0. P0 से स्टार्ट कर दिया. क्लियर है? After a time t1 second, where it reaches, है ना? हम जैसे देख रहे हैं हम, है ना? P0 से ऑब्जेक्ट को देख लिया, है ना? Where is initial position of the object? P0. Suppose the observer is at the center. The observer is at the center. मैं इसको मूवमेंट देख रहे हैं, तो मैं
गर्दन तो ऐसे ऊपर करना है ना एक को देखने के लिए, तो कितना ऊपर देख लिया मैं, एंगल चेंज होगा, ठीक है। सो दैट एंगल इन टाइम t1 with theta 1, correct, with initial position. After a time t2 second, the position of the object be theta 2. Where is the initial position? P naught. After a time t1 second, where is the position? A. And what is the angle traced by the vector or radius vector? That is theta 1. After a time t2 second, the radius vector, the angle traced by the radius vector is equal to theta 2. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ये ना डिस्प्लेसमेंट हियर ए टू बी है ना, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है. सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 टू t2 है ना, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा is equal to final minus initial. So this is what? Delta theta. This is delta theta. This is the angular displacement. What is the angular displacement ka definition? Angular displacement of an object moving along a circular path. Angular displacement of an object moving along a circular path is the angle swept out by the angle covered or swept out by angle swept out by the radius vector. Angle swept out by the radius vector is called angular displacement. The angular displacement is defined as the if an object moves along a circular path is defined as the angle swept out or traced out or the swept out by the radius vector in a given time is called angular displacement. Here what is the angular displacement? Delta theta in a time t2 minus t1 second. That is theta 2 minus theta 1. Or delta theta is equal to mass का formula trigonometry arc by radius use कर सकते हैं, याद है? arc by radius. और अगर ये distance है delta s, so what is the length of the arc here? Delta s divided by r. Delta s divided by r. Soumya, what according to this definition, what will be the unit of angular displacement? What is the SI unit of angular displacement? No unit. Why? Displacement meter है, radius भी meter है, meter cancel. No unit. ठीक है, no unit है. unit थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन है यूनिट, बट डायमेंशन नो डायमेंशन. दूसरा यूनिट कौन सा? रेडियन. एंगल की यूनिट कौन सा? रेडियन. एस यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, but no dimension. क्यों? ऊपर भी मीटर है, नीचे मीटर है, कैंसर. एंगल हैज नो डायमेंशन. पढ़ा ना तो? एंगल हैज नो डायमेंशन. सो व्हाट इज ऐसे यूनिट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन. ये क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर? ओके. द नेक्स्ट टर्म दैट इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन इज एंगुलर वेलोसिटी. रेडियस वेक्टर. रेडियस मीन्स देखो ये ना रेडियस
ये कितना एंगल कवर किया, देखो ये रेडियस, ये तो मूव कर रहा है ना, ये वाला लाइन मूव कर रहा है, देखो ये। सो एंगल सब्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर, ये वाला रेडियस वेक्टर, क्लियर क्लियर है, एंगल सब्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। अभी नोट मत करना, पता नहीं बाद में लिखवा दूंगा तब, ठीक है। एंगल सब्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है सबको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट इज रेडियन एंड नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। Let's see what is velocity definition. What is definition of velocity? Change in displacement in a particular. Yes, the time rate of change or displacement is called velocity. Now, what is angular displacement? The time rate of change of angular displacement. The time rate of change of angular displacement. And angular velocity, that is denoted by the letter omega. That is denoted by the letter omega. Omega. Okay. What is angular velocity? The time rate of change of angular velocity is called, sorry, angular displacement is called angular velocity. The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. Angular velocity. Then what is the average angular velocity? Average, that is average angular velocity is equal to delta theta divided by delta. If this time interval is very, very small, that is, we can take limit delta t tends to 0, very, 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 very small. Then this delta theta divided by delta t is called d theta divided by dt. That is called instantaneous angular velocity. Differentiation, that is instantaneous angular, पढ़ाना पड़ा पीछे भी, सेम है, सब कुछ सेम है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल क्या चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल चाहिए, है ना, वेरी वेरी स्मॉल। हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्लास में, क्योंकि टांजेंट के दो पॉइंट क्लोज 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 आएगा, तो टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल. In that interval, it converted into differentiation. That is called instantaneous angular velocity. At particular instant mode. Angular velocity at a particular instant is called what? Instantaneous angular velocity. Clear? Angular velocity. Simply, we can say theta divided by t. Theta divided by t. अब बताओ, what is the SI unit of delta theta? रेडियन, और टाइम का सेकेंड. सो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? है डायमेंशन? t-1. थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम का है ना डायमेंशन, टी आएगा ना नीचे, 1/t आएगा, दैट इज t raised to power -1, 1t raised to -1, है ना. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? m raised to power 0, l raised to power 0, t -1. और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज m raised to power 0, l raised to power 0, t raised to power 0. ये क्लियर है सबको? ये समझोगे डेफिनेशन? क्लियर है? डेल्टा थीटा यूज किया तो एवरेज आएगा, और डिफरेंशिएशन है तो इंस्टेंटेनियस आएगा. ठीक है ना. पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में फाइंड कर रहे हैं, ये क्या होगा? एवरेज. और
स्मॉल टाइम इंटरवल में फाइंड करें देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस. स्मॉल के लिए क्या यूज करना है? डिफरेंशिएशन. कोई बार डिफरेंशिएशन यूज करो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा. हियर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है. क्लियर? क्लियर है? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरा फिजिक्स में अप्लाई करना होगा रिलेशन. ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड linear velocity. Relation between, very very important, ये relation very important. अभी एक चैप्टर है आपका पूरा फिजिक्स में रोटेशनल मोशन पूरा अप्लाई करना है. ठीक है, कन्वर्शन के लिए पूरा पूरा ही अप्लाई करना है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल. ठीक है, इसी का बेस है. सबसे मुश्किल चैप्टर रोटेशनल मोशन है, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना. रोटेशनल तो सर्कुलर मोशन कौन सा है? रोटेशनल है. तो ये वाला फॉर्मूला दोबारा रिपीट होगा. ठीक है, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी. v लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. circular path, center of at any instant object is here, A position, A, B, delta, theta और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एस लिख दिया मैं. ओके, डेल्टा एस. This is a radius. According to definition, delta theta is equal to delta s divided by r. है ना? Arc by radius. Yes or no? Clear? Clear है? Any doubt? Dividing both sides by delta t. Dividing both sides by delta t. Divide both sides by delta t. क्या होगा? Delta t theta divided by delta t is equal to delta s divided by delta t into 1 by r. लिख सकते हैं? ऐसा ना? Clear है? Clear? Next, take limit delta t tends to 0 on both sides. So delta theta divided by delta t is equal to 1 by r the constant radius. तो क्या होगा? लिमिट डेल्टा t tends to 0 delta s divided by delta t. What is limit delta t tends to 0 delta theta divided by delta t? d theta divided by dt is equal to 1 by r into what is delta s divided by delta t? ds divided by dt. d theta divided by dt, omega, instantaneous angular velocity. ठीक है, is equal to 1 by r into what is ds by dt? Linear velocity v. Clear है? Cross multiplication v is equal to r omega. What is the relation between linear velocity and angular velocity? V is equal to r omega. V is equal to, कोई भी क्वेश्चन में v given है, r given है, we can find angular velocity. What is the formula? V is equal to r omega. V is equal to r omega. Very very important relation. ये क्लियर है सबको? क्लियर है? एक बार नोट कर दो ये. बस लिख दो. Define the term angular displacement
angular displacement. The angular displacement of a particle, the angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle swept out by radius vector in the given time interval. Draw the figure, first figure. ये वाला figure draw करो. Suppose a particle starts from the position P naught. Suppose a particle starts from the position P naught, full stop. Its angular position is theta 1 in time t1. Its angular position is theta 1. Its angular position is theta 1 in time t1 and theta 2 in time t2 Next, full stop. Let the particle cover a distance delta s in the time interval t2 minus t1, in the time interval t2 minus t1, t2 minus t1, it revolves through an angle delta theta is equal to theta 2 minus theta 1. Delta theta is equal to theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1. Then the angular displacement delta theta is equal to angular displacement delta theta is equal to delta S divided by R. नीचे लिख दो. The unit of angular displacement is radian and its dimensional formula
no dimension formula. That is m raised to power 0, L raised to power 0, T raised to power 0. No dimension. Next, define angular displacement. Sorry, angular velocity. Define the term angular velocity. Right. The time rate of change of the time rate of change of angular displacement of a particle is called angular velocity. And its unit is radian per second, and its dimensional formula m0, m raised to power 0, L raised to power 0, and T raised to power minus 1. Next line में लिख दो. If next line, if delta theta is the angular displacement of a particle, is the angular displacement of a particle in time delta t, then its average angular velocity is given by omega bar is equal to, board में given है देखो right hand side में, delta theta divided by delta t. Next line में लिख दो. When the time interval, when average, बार का मतलब क्या है? Average. Next, when the time interval delta t tends to 0, comma, the limiting value of the average velocity, is called the instantaneous angular velocity. Angular velocity which is given by, ये लिख दो, ओमेगा is ये लिख दो ना, second line, limit delta t tends to 0, delta theta divided by delta t equal to d theta by dt equal to omega. Yeah. Omega equal to d theta by dt. Next question लिख दो. Derive
the relation between linear velocity and angular velocity. Derive the relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity, write in bracket v, and angular velocity, write in bracket omega. Then next page. Draw this figure. Draw the figure. Consider a particle moving along a circular path of radius r. Suppose the particle moves from A to B in time delta t, covering a distance delta s along the arc AB. Delta S along the arc AB. Hence, the angular displacement of the particle, next line में लिख दो, angular displacement of the particle is delta theta is equal to delta S divided by R. ये लिख दो, delta S divided by R. Next, dividing both sides by delta T. Dividing both sides by delta T. Dividing both sides by delta T. Done. Delta T. So क्या होगा आंसर? Delta Q divided by delta T equal to delta S divided by delta T into 1 by R. Next, taking the limit delta T tends to 0 on both sides. Taking the limit delta T tends to 0 on both sides. We get limit delta T tends to 0. Delta theta divided by delta T equal to 1 by R into limit delta T tends to 0 delta S divided by delta T. ये वाला statement. What is limit delta T tends to 0 delta theta divided by delta T? D theta divided by dt. है ना, इंस्टेंटेनियस बन गई. ठीक है, लिमिट लेते समय हमेशा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस. और
limit to delta t tends to 0, delta s divided by delta t is equal to ds by dt. And according to definition, what is d theta divided by dt? Omega. Or ds by dt? V, velocity, and a rate of change or displacement. I don't. V is omega equal to V by R. Cross multiply किया तो V is equal to R omega. V is equal to R omega. और वेक्टर फॉर्म में लिख दो. इन वेक्टर फॉर्म भी याद कर लो, ठीक है. इन वेक्टर फॉर्म V cross is equal to omega cross R. Omega cross R. ठीक है. V cross is equal omega cross R. है ना? Omega cross. Next लिख दो. What is time period, comma frequency? किया था 9th class में, same definition. What is time period? Time taken to complete one revolution. And what is time period? What is the frequency? Number of complete revolution produced in 1 second. है ना? एक ही है ना, याद है? I don't define the term time period, frequency, and deduce the relation between time period and frequency. क्या relation है? Time period is equal to 1 by frequency, और frequency is equal to 1 by time period. एक ही बात. clear है? I don't. Time period. Time taken by a particle. Time taken by a particle to complete one revolution along a circular path. Time taken to complete one revolution along a circular path. Time taken to complete one revolution along a circular path is called time period. Write in bracket capital T. हमेशा कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. The number of complete revolution. The number of complete revolution produced in 1 second. The number of complete revolutions produced in 1 second is called frequency. ये बताओ, what is definition of time period? What is definition of time period? Time taken to complete one revolution. इसका मतलब number of revolution produced in t second कितना होगा? Number of revolution produced in t seconds. Number of, listen, produced in t second is equal to Parth. Number of revolution produced in t seconds equal to, ये आप लोग अप्लाई नहीं कर देखो कॉन्सेप्ट. इसको ऊपर डेफिनेशन लिख के क्या देखो बराबर है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? number of time taken to complete
1 revolution. 1 revolution कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए हमको? टाइम पीरियड. ये टी क्या चीज है? टाइम पीरियड है. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन प्रोड्यूस इन टी सेकेंड कितना होगा? 1. टाइम पीरियड में 1 रेवोल्यूशन प्रोड्यूस होगा ना, दैट इज अ डेफिनेशन है. इज इक्वल टू 1. ये क्लियर है? नंबर ऑफ कंप्लीट revolution produced in t second is equal to 1. So number of revolution produced in 1 second कितना होगा? 1 upon t. t second में 1, तो 1 second में 1 by t. ये definition क्या है? Number of revolution produced in 1 second is called frequency. Is called frequency. So frequency is equal to 1 by t. ये relation. ये कर दो. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन प्रोड्यूस इन टी सेकेंड है ना. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन कितना है? टी सेकेंड है. तो टी सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन प्रोड्यूस होगा? 1. तो 1 सेकेंड में 1 बाई टी, दैट इज फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो. डिराइव छोड़ दो. deduce DEDUC deduce relation between angular velocity comma frequency and time period. Angular relation between angular velocity, frequency and time period. Listen. We know that angular velocity is equal to angular displacement upon time taken. No, simply we can say, no? Angular velocity is equal to angular displacement upon time taken. If t equal to t, इसका मतलब क्या है? t is equal to time period. What is the meaning of time period? 1 revolution. So what is the angular displacement? अगर t equal to t, then theta is equal to कितना angle rotate किया हुआ है? 360 degree. But you have to convert, second है, तो you have to convert this into radian. 360 degree is equal to how many radian? 2 pi. है ना? How to convert? Multiplied by 180 by pi. Sorry, pi by 180. Pi by 180. Multiplied by pi by 180. So that is equal to 2 pi radian. ये समझ में आ गया सबको? अगर t equal to t, t का मतलब क्या? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. 1 रेवोल्यूशन करते समय कितना डिग्री रोटेट किया होगा? 360 डिग्री. 360 डिग्री का मतलब कितना रेडियन है? 2 पाई रेडियन. ये वैल्यू इधर पुट कर दो. ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज थीटा? 2 पाई. व्हाट इज टी? टाइम पीरियड. सो ये रिलेशन हो गई. ओमेगा इक्वल टू, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं. और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई. व्हाट इज 1 बाई टी? एफ फ्रीक्वेंसी. ये भी है रिलेशनशिप. क्लियर है? क्लियर? ठीक है, राइट.
यही करते हैं. Done. Next question. Define angular acceleration. Define angular acceleration. Deduce its relation with linear acceleration. Deduce its relation with linear acceleration. Aditi, what is acceleration? Rate of change of velocity. Then what is angular acceleration? Time rate of change of angular velocity. That's all. The time rate of change of angular velocity of a particle the time rate of change of angular velocity of a particle is angular acceleration. It is denoted by the letter alpha. Alpha. Okay? Denoted by the letter alpha. If delta omega is the change in angular velocity, delta omega is the change in angular velocity in time delta t, then average angular acceleration is given by alpha bar is equal to delta omega divided by delta t. और इसको मैं लिमिट लिया तो क्या होगा? एक्सेलरेशन. और इसमें इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? लिमिट. Alpha, instantaneous acceleration alpha is equal to limit delta t tends to 0, delta omega divided by delta t is equal to d omega divided by dt. D omega divided by dt. Next question क्या? Deduce the relation between linear acceleration and angular acceleration. Same way देखो. Listen. We know that V is equal to R omega relation. पीछे किया था? V याद कर लो अभी से. ठीक है? Very very important है. V is equal to R omega. You know, R is a constant, radius. Radius हमेशा constant होगा ना. Differentiate both sides with respect to t. Differentiate both sides with respect to t. Differentiate with respect to t. क्या होगा फिर? dv divided by dt equal to d by dt of r omega. dv by dt is equal to r is a
constant. Take outside the differentiation. D omega divided by dt. Definition dv by dt क्या है? A acceleration instantaneous. R. What is d omega by dt? अभी जो किया था हम. D omega dt alpha. So A is equal to R alpha. Same way. V equal to R omega. A is equal to R alpha. A is equal to R alpha. Clear? Relationship. Next question. Very, very important marker next. Next question, very, very important marker. Define centripetal acceleration. Define centripetal acceleration. Very, very important. Derive an expression for the centripetal acceleration of a particle moving along moving with uniform speed v. Derive an expression for the centripetal acceleration of a particle moving with uniform speed v along a circular path of radius r. R, small letter r. Definition लिख दो. A body undergoing uniform circular motion is acted upon by इसका cause of clear है सबको? What is the cause of this acceleration? Change in direction. A body undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center. Center seeking है. Towards the center of the circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. Means center seeking acceleration है. नहीं तो इसका मीनिंग देखो. Center seeking ब्रैकेट में लिख देना. Center seeking acceleration is called centripetal acceleration. अब देखो derivation. Close your copy and listen here. You have to apply the concept of vector here. Listen. Very, very important. Very, very important.
circular path an object moving along a circular path of radius r. Moving along a circular path of radius r. At any instant, the position of the object be at A. And to find the velocity at A, you have to draw tangent. Draw a tangent at point A. Tangent and radius are always perpendicular. This is the direction of the velocity. मैं लिख दिया v1. लिख सकते? क्लियर? ठीक है. Any doubts? कोई डाउट है तो पूछो. कोई भी डाउट है डेरिवेशन में तो पूछना. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सब. जब तक क्लियर है सबको. ओके. After a time t second, delta t seconds, very small time interval. देखो ध्यान रख दो. This is very small time interval है. पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एनलार्ज करके दिखा रहे इधर. बट ध्यान रख दो दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल है. देखो इतना बड़ा सर्कल नहीं है. वेरी स्मॉल. ये अगर सर्कल है ये तो ये डिस्प्लेसमेंट देख लो. थीटा वेरी स्मॉल है. थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है. थीटा वेरी स्मॉल. आपका फिगर को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनलार्ज करके दिखा रहे हैं. ठीक है. क्लियर है. एट एनी इंस्टेंट इतना बड़ा एंगल नहीं है. ध्यान रखते हैं. डेल्टा थीटा reaches the point B. Reaches the point B. ये भी क्लियर है सबको. At point B, the velocity of the particle B. To find the velocity at point B, क्या ड्रॉ करना आपको? Tangent. Okay. This is V2. अब ध्यान से देखो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैं पहले डिस्कस किया था. इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज आर सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज इक्वल होगा. स्पीड इक्वल होगा. स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड इज कांस्टेंट. इसका मतलब modulus of V1 is equal to modulus of V2. ये equal होगा. Modulus of V1 is equal to modulus of V2. ऐसा हो ना? ये क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब लेंथ ऑफ द टांजेंट इक्वल होगा ना. लेंथ ऑफ द टांजेंट इक्वल होगा. ये छोड़ दो. ये क्लियर है सबको? इधर तक क्लियर है? एनी डाउट? स्टेप्स क्लियर? ओके. ये देखो मैं क्या बोला तुम्हें. इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ए. आफ्टर ए टाइम डेल्टा टी सेकेंड, दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. डेल्टा टी सेकेंड, इट रीचेस द पॉइंट ए बी. It reaches the point A, B. It reaches the point A, B with velocity V2. With velocity V2. But magnitude of these two velocities are equal. Velocity क्या magnitude? Velocity equal नहीं है. इसका magnitude equal है. Velocity क्यों equal नहीं है? Direction changes. That is why it is accelerated. That is why it is accelerated. That is why which acceleration is produced? Centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. इसमें टैंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा ना. क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड सेम है. क्लियर है? क्लियर? ठीक है. ये कौन सी? इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिए हम. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? एनी डाउट? अब देखो
Now take a point outside it. एक पॉइंट में आउटसाइड लिया P. which पॉइंट है P. Now ये दोनों वेक्टर ए ड्रॉ किया ना, V1 ड्रॉ किया मैं, ये वेक्टर इधर ड्रॉ करने के लिए क्या करना आपको, वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर हियर, वी कैन शिफ्ट वेक्टर एनीवेयर कंडीशन without changing its direction, without rotating, we can shift the vector anywhere. मैं इसको टेल कॉन्सर्ट करने के लिए क्या किया, ये V1 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, देखो सेम डायरेक्शन हो गया ना, ये सेम लेंथ में, दिस इज V1. ओके, दिस इज V1 एंड दूसरा कौन सा है, B में V2, ये इधर ड्रॉ किया मैं, इस साइड है, किधर ये आ गई, दिस इज V2, दिस इज V2. कोई डाउट है तो पूछो. ये वेक्टर को V1 वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट कर दिया और V2 वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया, दोनों एक ही पॉइंट में मिलने के लिए. क्लियर है. तो उसका ज्वाइन किया मैं, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किया मैं, सपोज है PQ लिख दिया, AR लिख दिया और Q एंड R ज्वाइन किए मैं, ठीक है, Q एंड R ज्वाइन किए. ये भी क्लियर है सबको. Here we can apply triangle law of vector addition कर सकते. According to triangle law of addition देखो, PQ plus QR. According to triangle law of vector addition, the two vectors are represented magnitude and direction by the two sides of a triangle, and the third side that gives the resultant that taken in the opposite order. Check कर दो, अगर ये दो वेक्टर है, ये opposite order आ रहा है. Yes, sir. So we can apply triangle law of vector addition. According to triangle law of vector addition, PQ vector plus QR vector is equal to PR vector. Yes or no? Clear है. और PQ वेक्टर के वैल्यू कितने हैं, V1 प्लस QR वेक्टर तो फाइंड करना, इज इक्वल टू PR वेक्टर V2 वेक्टर. ठीक है, V2 वेक्टर. So what is QR vector? QR is equal to V2 minus V1. Let it be, मैं let कर रहे, let it be V vector. So V2 minus V1 को क्या लिख सकते आपको, V वेक्टर लिखते हैं. जब तक क्लियर है सबको, एनी डाउट, स्टेप्स क्लियर, ठीक है. अब देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, डेल्टा थीटा. तो V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है, V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा थीटा. वही सेम आएगा. रीजन बता सकते हैं, अगर ये डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा, क्यों, रीजन बताओ एनीवन. मैथ्स, किसको मैथ्स अच्छे से समझते हो, लोग बताओ तो. हियर एंगल बिटवीन द टू रेडियस इज डेल्टा थीटा, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2, आल्सो डेल्टा थीटा. रीजन देखो, अगर रीजन को पता होना चाहिए. देखो मैथ्स देखो ना, मैथ्स, ये आर गिवन है, ये आर गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, हमारा एक टेंजेंट इधर है ना 90 है,
ये कितना एंगल है 90, और दूसरा वेक्टर किधर है हमारा, इधर है, ये ना 90, ये वाला क्लियर है। ये कौन सा वेक्टर है B2, ये कौन सा B1, मैं प्रोड्यूस किया, मैं पूछा था ये एंगल कितना होगा, ये पूछा ना क्वेश्चन, ये पूछा ना क्वेश्चन में। देखो ये एंगल बिटवीन B1 एंड B2 के बीच में, देखो ये डेल्टा थीटा, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये देखो डेल्टा थीटा प्लस 90 प्लस मैं लिख दिया x प्लस x इक्वल टू 360, तो डेल्टा थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। और ये एंगल सपोज y, एंड व्हाट इज x प्लस y 180, लीनियर पेयर, ये दोनों इक्वल होगा, सो डेल्टा थीटा प्लस x इक्वल टू x प्लस y, x, सो y की वैल्यू क्या रहे डेल्टा थीटा। अगर ये डेल्टा थीटा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा थीटा। रीजन क्लियर है सबको, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैथ्स, ठीक है, क्लियर है। मीन्स इफ द टांजेंट का प्रॉपर्टी है, if the angle between two line is theta, then the angle between the perpendicular to that line is also theta. देखो ये दो लाइन है, इसका दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू परपेंडिकुलर इज आल्सो थीटा, द एंगल बिटवीन द टू परपेंडिकुलर इज आल्सो थीटा। ये प्रॉपर्टी यूज कर लो मैथ्स का, भाई प्रूफ मैं अभी दिखा दिया, क्लियर है, ठीक है। अगर है डेल्टा थीटा, दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा थीटा। अब बताओ मैं क्या बोला था, टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर है टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये ए और बी वेरी वेरी क्लोज होगा, इसका मतलब ये ए बी ऑलमोस्ट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो कोई भी सर्कल है, इसको दो पॉइंट वेरी वेरी क्लोज कर दिया मैं, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन होगा ना, सर, ठीक है। इसलिए हम ये अज्यूम किया था दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज, सो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। मैं अभी दिखा रहा है इसे, और ध्यान रखना ये सेपरेट लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है, क्लियर है। अब बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों, ये देखो ये आर, सो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये डेल्टा थीटा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी 180 माइनस, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी देखो टांजेंट आर इक्वल है, वाई टांजेंट आर इक्वल, v1 इक्वल टू v2, सो लेंथ ऑफ द टांजेंट्स आर आल्सो इक्वल। अगर ए भी इक्वल है, ए भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी कितना होगा सेम 180 माइनस थीटा बाई डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी 180 माइनस डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 2। सो इन अ ट्रू ट्रायंगल्स एंगल्स आर इक्वल, देन द ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा QPR बाई AA सिमिलैरिटी, ठीक है। मैं इसकी तरफ दिखाना नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। रीजन क्लियर है सबको, रीजन क्लियर, एनी डाउट? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, sides are proportional, that is AO divided by QP is equal to AB divided by QR. देखो corresponding side, first two letter
first two letter. First and second. Sorry, first and third. First and third. है ना, वही देखते हैं ना, सिमिलैरिटी याद है 10th क्लास, है ना. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अब वैल्यू पुट कर दो. एओ का वैल्यू कितना है? एओ आर. क्यू पी की वैल्यू कितना है? क्यू पी V1. बट इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहिए ना. ये व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ V1? सपोज मैं लिख दिया V. इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया? V. लिख सकता है, ठीक है. मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V R, ठीक है. ये डेल्टा V लिख देना. ये डिफरेंस है ना, ये है ना, डिफरेंस है. डेल्टा V लिख देना, ठीक है. ये B है, ठीक है. ये B लिख दे. सपोज व्हाट इज AB? डिस्प्लेसमेंट है ना, डेल्टा S. डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट. और व्हाट इज QR? व्हाट इज QR? डेल्टा V. इसका मैग्नीट्यूड, QR की वैल्यू डेल्टा V, मैग्नीट्यूड है डेल्टा V, ठीक है. ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है, ठीक है. सो डेल्टा S बाई डेल्टा V इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर. और क्या लिख सकते हैं? देखो इसमें से डेल्टा V is equal to R by V, sorry, V by R into डेल्टा S. मैं इधर लिख दिया, इधर शिफ्ट कर दिया. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T. डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T equal to V by R into delta S divided by, take limit delta T on both sides. So क्या होगा? लिमिट डेल्टा T tends to 0, delta V divided by delta T equal to V by R into limit delta T tends to 0, delta S divided by delta T. What is the answer of this? dV by dt equal to V by R into, what is delta S by delta T? ds by dt. dV by dt is called acceleration. That is called centripetal acceleration. That is denoted by AC. Is equal to V by R into ds by dt, V. So what is centripetal acceleration? V squared divided by R. ये ना, ये पढ़ा ना आपको. What is the formula to find the centripetal force? mv squared by R. इसके साथ देखो m मल्टीप्लाई कर दो, वही आ रहा है ना, ये mv squared by R. Correct? This is the formula to find the centripetal acceleration. Centripetal acceleration. What is the formula to find the centripetal acceleration? V squared by R. How to derive the formula? कोई डाउट है तो पूछो. इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी डेरिवेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी पार्ट क्लियर नहीं है, पूछो. Write down. Draw the figure. First draw this figure. Consider a particle moving on a circular path of radius R, small letter r, and center O with a uniform speed V. With a uniform Speed V. Suppose at time t the particle is at a
एक काम कर दो, ये स्टेटमेंट काट दो, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देना, पूरा नहीं है, लास्ट इन टाइम टी लिखा ना, वही काट दो, फिर लिख दो इन टाइम डेल्टा टी सेकेंड, in time delta t second, the particle moves from A to B, है ना, moves from A to B. फिर ये फिगर ड्रॉ कर दो, ये वेलोसिटी सब मार्क कर देना, ये फिर लिख दो let v1 vector and v2 vector with the velocity vectors at A and B vectors at A and B along the tangents at P and Q. Sorry, at A and B. Along the tangents at A and B, respectively. But in uniform circular motion, ये लिख दो modulus of V1 equal to modulus of V2 equal to V लिख सकते हैं, मैं लेट किया, ठीक है, V modulus of V1 is equal to modulus of V2 is equal to V. Clear? Next. फिर आ जाओ, to determine, next line में लिख दो, to determine the change in velocity draw PQ vector, means vector PQ equal and parallel to V1, outside draw करना, देखो मैं ड्रॉ किया ना PQ vector outside, PQ vector equal and parallel to V1 and PR vector equal and parallel to V2 vector. फिर लिख दो draw QR vector to close the triangle. Draw QR vector to close the triangle. Next line में लिख दो apply triangle law of vector addition. Apply triangle law of vector addition. ये कर दो पूरा, जब तक लिख देना, इधर से जब तक, या पूरा कर सकते हैं ना, सिमिलर कैसे प्रूव कर दिया, समझ में आ गया सबको, बट दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, क्लियर है, कोई पूछा तो कैसे फाइंड करना है ना, बता सकते हैं ना आपको, क्लियर है, क्लियर, ये पूरा centripetal acceleration equal to v squared divided by r.
डन. इसके एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको. इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट. ठीक है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी है ना, v स्क्वायर्ड बाई आर. इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट. राइट ऑन. इसको नीचे लिख दो. राइट ऑन. वी नो दैट v इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है, आर ओमेगा. वाई पुट कर दो. AC is equal to v squared by r. What is V? R omega square divided by r. R square omega square divided by r cancel. So what is the value of AC in terms of omega? Omega squared r. ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. ओमेगा स्क्वायर्ड आर. क्लियर. सो मोशन, the plane, clear chapter.